Yeah, we'll just wait for a minute and we'll start, friends. You're doing this without light? Should I? No, without light, it's coming So better. dark. It's not dark. Should I start? बहुत bright हो जाता है screen. Yeah, just we'll wait for a minute and start. No, it's not playing. Yeah, pardon me for a minute delay. Was just doing a tech checks. So what we have been seeing in the markets, जो हम देख रहे थे 2-4 दिन से कि निफ्टी में कॉइलिंग प्राइस एक्शन था और बैंक निफ्टी भी काफी ओवरबॉट था, तो एक रिएक्शन की उम्मीद थी और वो रिएक्शन आ गया. हाय डेटी ट्रेडर, योर रेगुलर वेलकम बैक सर. और वो कॉइलिंग एक्शन हैज नाउ शोन इट्स ट्रू कलर्स, फाइन. सो कभी भी आप ध्यान रखो एज अ ट्रेडर, अगर आपको कॉइलिंग प्राइस एक्शन दिख रहा, it itself says that things are likely to change in the short term. So there we go to Nifty. Fine. So let me open the trading view also. Yeah, IT trader, I see you very regular. Great, keep it up. See, ये सेशन एक कंटिन्यूटी भी है. Make sure you attend. Don't miss out on the sessions. अगर आपसे मिस हो जा रहे हैं, see the recording is there on YouTube ना. Just take out some time, 5-10 मिनट निकाल लो अपने शेड्यूल से and please go through the same because these sessions are in continuation. Right? So that's where Nifty is right now. अभी निफ्टी में क्या हुआ देखिए, एक बहुत बड़ा पैटर्न बना निफ्टी में. When Nifty went up, there was a gap over here. Now Nifty came down at the same price point. There is a gap, right? अगर सामने सामने गैप हो ना, तो this is what we call an island reversal pattern. An island reversal pattern generally signifies a high is in place, whether short term, medium term, I will say. So make sure आज जो हम एक पैटर्न देख रहे हैं वो एक आइलैंड रिवर्सल का पैटर्न है निफ्टी में. Right? तो जब तक ये गैप फिल नहीं हो जा रहा है, सारे बाउंसेस, पुल बैक्स और द मूव सिर्फ वहां तक जा सकते हैं. सो लेट्स गो एंड कीप अ नोट ऑफ दिस पैटर्न. ये रेयर आता है, बट जब आता है एज अ ट्रेडर हमें इस पे ध्यान देना है. सो द ट्रेंड ऑन द निफ्टी इज डाउन स्विंग है. आज मार्केट गैप डाउन से नीचे खुला है और ये गैप डाउन ने क्या पैटर्न क्रिएट किया is, I'll write it down, the candle pattern is island reversal. And on the resistance side, मैं बहुत दूर का resistance नहीं देखूंगा. Today's high और इस entire gap, अभी ये गैप जो बना है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये गैप ही आपका रेजिस्टेंस बन गया यहाँ से. सो नाउ हम लोग 26,000, 25,900 कोई भी भाव नहीं देखने वाले. सो द गैप इटसेल्फ इज 25,600 to 25,755. So this gap will now act as a strong resistance. So that's why I've written 750. I'll change it. 25 700 के आसपास प्लस और माइनस 50 पॉइंट्स. ओके, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जा रहा है. ऑन द डाउन साइड अगर सपोर्ट ले तो 25 के नीचे आ रहा है. तो अभी यहाँ पे अगर हम सपोर्ट ले रहे हैं तो प्लेन प्राइस चार्ट पे बहुत बार इंडिकेशन नहीं मिल रहा, which means that from low is clear. Will it go all the way till this low? Remember, nothing moves in one straight line. It can, but as a trader, we explore further.
So the first stop we think is in terms of Bollinger Band. आज निफ्टी ने मिडिल बैंड पे क्लोज किया है भाई। अभी यहां से लेके गैप तक मुझे कोई भी सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है भाई। सो टेंडेंसी ऑफ द मार्केट, जैसे हम बोल रहे थे, पहले ये गैप फिल किया और आइलैंड क्रिएट किया। नाउ द टेंडेंसी ऑफ द मार्केट इज, आज का जो क्लोजिंग है और ये ओपनिंग गैप है, अभी ये गैप भरने की कोशिश करेगा मार्केट, फाइन। So that way, right now, we are not expecting or trading for any bounce, pullback or reversals. जो भी होगा इंट्राडे में खत्म हो जाएगा और वो गैप पे एक अच्छा रेजिस्टेंस आ जाएगा। सो सपोर्ट में बीच में कोई सपोर्ट नहीं लूंगा। 25,200 के आसपास ही लेंगे, बिकॉज गैप का स्टार्टिंग पॉइंट ही है। उसके पहले अगर सपोर्ट बनता है तो विल हैव अ लुक एट इट। और आज मार्केट्स अगर आप देखें तो मिडिल बैंड पे बंद हुआ, विच इज द 20-day मूविंग एवरेज। और ये ब्रेक होते ही इट ओपन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ 25,112। बट बीच में इंट्राडे में बीच में कहीं भी एक सपोर्ट आ सकता। मैं स्विंग सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। चलो 25,200 से 25,122 ले लेते हैं। 25,200 से 25,122। Okay, so that's we will mark the support. And let me read out the disclaimer. The sessions हम लोग जो कर रहे हैं is for educational and informational purpose only and does not constitute any financial advice. हम ये education purpose से कर रहे हैं। और अभी टेक्निकल स्टडी आपकी जो फोकस में आएगी वो दो चीज रहेगी। एक है बोलिंगर बैंड्स, दूसरा है जो आज का आइलैंड रिवर्सल गैप बना है। तो आपको इंडिकेटर में से बोलिंगर बैंड सिलेक्ट करना है और चार्ट पैटर्न में से आइलैंड रिवर्सल पकड़ के आपको प्लान बनाना है, फाइन। और पीसीआर निफ्टी का अगर देखते ओआई बिल्डअप, तो 25,700 पे भी काफी ओआई बिल्डअप है, तो यही मेरा एक रेजिस्टेंस बन जा रहा है। और नीचे में देखें तो 25,500 पे पुट में ओआई बिल्डअप है। तो अगर 25,500 टूटता है तो फिर एक जगह खुल जाती है फॉर स्लाइड टुवर्ड्स 25,200। और पीसीआर नाउ इज 0.45 जो कि बिलो मिडवे मार्क है। सो पीसीआर सेज दैट देयर इज अगेन, अगर क्यूमुलेटिव देखते हैं, सी लेट मी शो यू ये डेटा कहाँ से आते हैं। सो आई गो टू माय स्टॉको इनक्रेड मनी इंस्टा ऑप्शंस प्लेटफॉर्म, निफ्टी में जाता हूँ और मैं ओआई स्टैटिस्टिक्स पे जाता हूँ। तो अभी आप देखो कॉल राइटर का कल भी हमने देखा था, वी सॉ यस्टरडे आल्सो, कॉल राइटर्स का पलड़ा काफी भारी है। जब उनका पलड़ा इतना भारी होता तो एक बार मार्केट गोज इन फॉर अ स्लाइड ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। सो द कॉल में ओपन इंटरेस्ट है 26.26 करोड़ और पुट में 16.28 करोड़। So market is OI buildup is heavy on the call side of it, and generally, it's not, I might be right or wrong. The OI belongs to the sellers. So that's the PCR and the OI distribution on the Nifty. Straddle price dekhte, which is the at the money call option and put option, the premium combined. Abhi ye 202 ka bhav aa raha hai. So which means that volatility is here to stay. आज भी अगर मार्केट देखे, कल का स्टैडल प्राइस कितना था? इफ एनीबडी रिमेंबर, लेट मी आस्क। आई कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ traders out there who are regular. Yeah, we'll come to bank nifty right now after this, Abhijit. Right, it was around 240 and we did see that tank in the markets. So commentary क्या रहेगी यहाँ पे, हम क्या expect कर सकते हैं? Market is heading towards the filling of the gap, which does not take into account intraday bounce or pullbacks. Right, in between अगर rise और rallies है, so I think it will fizzle out somewhere in this, ये resistance zone बन गया market का। This is how the Nifty is, right? Now, yeah, Abhijit, now we are going to Bank Nifty. So this is the Bank Nifty. See, Bank Nifty abhi bhi relatively stronger in Nifty se, but that doesn't mean it makes much of a difference to a trader, because a trader jo rehta hai na, one who is either trading swing or day, he goes with the immediate picture, and an immediate picture is of a dip or a decline. Right?
So first, let me remove the indicators. Let me make first. We always studies the price action. पहले भाव देखते हैं, जो कहावत है ना, भाव भगवान है. So first, let's watch the price, and then we'll put in the additional supportive tools. So Bank Nifty also, it's in a downswing. Why we are saying in a downswing? जो consolidation band था, वो उसने तोड़ दिया. So let me go and show you. So the moment this was a consolidation in Bank Nifty, and Abhijit, can you see over here at this point, it had breached the consolidation. Right? So that also labels as once a low is taken out, the swing changes to down. And if the swing has changes to down, Nifty has gone far below this support, but Bank Nifty अभी भी gap पे hold करना है. So let's see whether Bank Nifty holds somewhere around here for another leg of a consolidation, or it comes down and fills this gap. Time will tell. But yeah, we are tracking the market on the live basis. So now Bank Nifty, the support is around 500 point niche, which is this. So till the support does not break, we can't think of lower levels. So that won't be analysis as per the charts, right? So let's wait for this, and support pair, it can dip down given the market conditions. And on the upside, this is the resistance for Bank Nifty. Any bounce pullback, it looks that because see एक बार consolidation पे अगर बहुत time spend किया ना, एक दो तीन चार पांच चार candles थी यहाँ पे, that means it's a strong resistance, because it also says everybody stuck out there. So वापस से वो भाव आएगा तो they will be sellers. So Abhijit says, sir, arrow कैसे निकालते हो? Please go to our YouTube site on the Stocko SAS online. और वहाँ पे मैंने पूरा 45 minutes का how to use trading view professionally I have recorded it. Fine. If you want end of the session, I'll put the link in the chat also. Is this okay, Abhijit? आप देख लीजिए सर. फाइन. वो एरो कहाँ से आ रहा है? That's all part of a trading view tutorials, which we have done extensively. So that's Bank Nifty again. The pressure is on the downside, and push towards further into this is a possible. That's how markets are positioned. अगर OI point of view से भी अगर देखते हैं तो 60,500 का बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग है, और OI बिल्डअप इन कॉल है, और पुट पे 60,000 पे. So it shows that there could be a touch and go at 60,000. Any pullback bounce जो है 60,500 पे रुक जाएगा. So let's go and check how far those levels are. So I think more or less बैंक निफ्टी 60,000 पे. If that goes away ना, तो एक डिप आता है. अगर OI बिल्डअप पुट में और वो रेंज के नीचे जा रहा है, and you have to just check it in the live markets. Are writers squaring a position in the put at that strike price? You will see the change happening. If that happens, तो और एक डिप मिलेगा वहां पे. Fine. So that's बैंक निफ्टी. एंड अगर पैटर्न की बात करते हैं बैंक निफ्टी में आज कैंडल्स की, तो पैटर्न इज बेयरिश एक्सपैंडेड रेंज कैंडल. फाइन. जो कि दर्शाता है खुलते ही आज सेलर्स आए मार्केट में. और अगर टेक्निकल स्टडी हमको यहाँ पे कौन सी लेके चलनी है, सो अगर दैट इफ वी सी, देन इट हैज टू बी बोलिंगर बैंड्स. सी मूव्स हम लोग तीन भाव में पकड़ते हैं. वंस प्राइसेस आर ओवरबॉट, we look for signs of weakness. Once we see signs of weakness, then we see a swing towards the middle Bollinger Band. Fine. The second and third is middle band के नीचे अगर weakness दिखाते, then it opens a possibility of on the downside. But right now we will stop over here, which is the middle Bollinger Band. Got it, Abhijit? You wanted to know about Bank Nifty? तीन parts में upper, middle और lower band का एक swing मिलता है. Sometimes it goes in one swift go, but then as we are tracking markets live, if that's happening, we'll come to know. Fine. So that's Bank Nifty. और गोल्ड में देख ले तो what we are seeing in gold is एक retracement पे स्टक कर रहा था, because हम गोल्ड्स भी रोज देखते हैं MCX पे. और गोल्ड में हम ये देख रहे थे कि once prices are in a pullback mode, जो कि retracement levels रहते हैं, it's too tough for market to cross those retracement in one swift go after a sharp decline. So if anybody remembers, this is the levels we were watching on the gold, which is 50 to 62% retracement,
and gold had touched this level and dipped down. Right? So gold will likely to stay within this range on the upside, जो कि 158,325 और 1,63,400 का रेजिस्टेंस है. On the downside, ये ब्रेक करना भी अभी, let's see which side gold break. अभी जो भी साइड गोल्ड ब्रेक करेगा यहाँ से, that side you'll get a directional move. Or till that point of time, gold will be in a consolidation fashion. Right? So that's all from my side. I'll keep the plan open, go through it, and let me repeat. The disclaimer: investment in securities markets are subject to market risks. Fine. Read all related documents carefully before investing, and brokerage will not exceed the SEBI prescribed limit. And the video content is for educational purpose. So now that's the plan. Like many of you wanted about trading view, I'll just take you to that tutorial. I'll put it in the link. आपकी सारी doubts जो trading view related है वो clear हो जाएगी. So I have done extensively, close to over 1.5 hours on trading view. So go to Stocko SAS Online, which is the YouTube channel of us. Over here, you can see in the video section. So we had done trading view tutorials, master charts and day trading. There are 2 trading view tutorials, fine. So you can go over here and select the one which you think is what you're looking for as far as study is concerned. So I'll just put that link over here. Done. And apart from this, आज हमारा एक कैंडलस्टिक पे सेशन है from 4:30 to 5:30. So which is, you can register. It's absolutely free. It's for you. Right. So I'll take you to the site, which is stocko.in. And आप होम पेज पे जाओगे तो आपको बैनर मिल जाएगा. So today we'll learn, understand, and explore what all candlestick is about, which is a single candle pattern. So it's a 3-part series: single, double, and triple candle pattern. Today we are doing the series on single candle pattern. So I put that link also in the chats. Do join in, forward to friends, traders out there. The more we meet each other, the more we learn, the better our trading becomes. Fine. And there's always sharing of conversation, ideas, and setups. So that's all from my side, friends. Thanks. Have a nice day, everybody. We'll meet everybody again at 4:30 in the candlestick analysis single candle pattern session.